हम अपने लिए तो वर्स्ट फ्रेंड है बट दूसरों के लिए बेस्ट फ्रेंड्स हैं. How we are the best person in the room for others, and when it comes to encourage them, we are always there. But when it comes to ourselves, we are the worst friend. सबसे पहले तो नेगेटिव टॉक्स ही निकलती हैं. At least in my case, I was like that. I was never a best friend for myself. Even though I wrote diaries and journal, and people will think, oh, she has such a good connection with herself. But maybe diaries, when I was reading my diaries, I couldn't stop but think myself कि सौम्या क्या बोल रही हो अपने आप को. This year I chose to go to university and not taking drop. It was a big decision for me. It was a decision which I took for myself, which was hard. But it forced me to learn to be with myself and to stand for myself. 2025 was not an easy year. जब मेरे जेई मेरे बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स चल रहे थे और जब उन सारे एग्ज़ाम्स में मैं फेल हो रही थी एंड ऑल माई लाइफ माई आइडेंटिटी वॉज बीइंग अ स्कॉलर, बीइंग गुड एट वन थिंग. मुझे सबने यही सिखाया था कि तुम बस एक ही चीज़ में अच्छी हो. एंड मैंने बिलीव भी कर लिया कि शायद मैं एक ही चीज़ में अच्छी हूँ एंड मुझे उसके लिए अप्रिशिएशन मिलता है, तो आई शुड गो फॉर इट, विच वॉज नॉट अ रॉन्ग थिंग. But it taught me how to talk with myself in the worst way possible. It taught me कि मैं अगर कुछ भी पॉजिटिव सोच लूँ तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही होगा, कि मुझे हमेशा मेच्योरली एक्ट करना है, कि मैं कभी छोटी बच्ची बन ही नहीं सकती. फिगरिंग आउट माई लाइफ. मुझे लगा मुझे पता है मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है. अभी तक मेरी लाइफ में सब वैसा होता था जैसे मैं चाहती थी, हो जाता था, इजी था, एंड आई ऑलवेज थॉट कि मुझसे सब हो जाता है. और मुझे लगा कि कॉम्पिटिशन्स में फेलना इज़ नॉट अ बिग थिंग, बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में फेल होना. लोगों की वीडियोस देखे थे, जब अपने साथ होता है तो बिलीव नहीं होता है. एंड दोज हू नो मी, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक. मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है और मैं बहुत कंफ्यूज हूँ. एक्चुअली आई वाज लुकिंग फॉर लाइक ट्रांजिशन वीडियो, और यू कैन से adulting diaries, or like how people figure out things, you know, and I didn't find any. So I thought, let me create one. See, I am no one. Like, I don't know. My life is not even planned. People around me, उनकी चीज़ें बहुत फिगर आउट है. मेरे फ्रेंड्स, मेरे क्लासमेट, उनकी थिंग्स सॉर्टेड है. 1% ऑफ द पीपल आर दोज, उनको जो चाहिए था उनको मिल गया. मैं जो पढ़ा, उनको जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर करने थे मिल गया. 2% वो लोग हैं जिनके पेरेंट्स को पता था उनको क्या करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग देयर पर्सनैलिटी, opportunities they can receive, and the capabilities, or you know, talent, not talent, but you know, everyone has their own capacity to do that thing. तो वो थे, वो 3% लोग हैं. What about us 97% people? 97% में से भी 5-10 लोग वही होंगे जो लाइक निकाल लेंगे यार, फोड़ लेंगे. मतलब मेरे दोस्त हैं वैसे, आई नो. No matter how much I work hard, I would never reach like them, and I'm not comparing myself. I'm just happy for them. I have no envy for them. But 5-10 लोग ऐसे होते हैं, उनसे हो जाता है कुछ ना कुछ. वो कर लेंगे लाइफ में, वो कर लेते हैं, वो बोलते हैं कर लेते हैं. उनके लिए स्कूलिंग नहीं होती, बट उनको जो स्ट्रीम चाहिए होती है कॉलेज में मिल जाती है. I am here confused. And when everything fell apart for me, when everything was not working for me, triangle, वो है काउंसलर रूम है, शायद वहीं शिफ्ट हो गया है. उसके बाद यहाँ फिज़िक्स लैब है, फिर यहाँ पे स्टाफ रूम है, बायो लैब है, एंड ये सारी क्लासेस हैं. इलेक्शन की वजह से सब ऐसे मेस्ड अप पड़ा है. आई वांटेड अ वेरी एस्थेटिक एंट्री, लाइक टेप लाना भूल गए. Oh my god, this is making me cry.
जो चीज़ सोची थी उस सब का उल्टा हो रहा था. That's when I decided to start from zero again. It was hard. पेरेंट्स तो ऑफ कोर्स उनकी एक्सपेक्टेशंस थी तो टूटना था ही, और उनके एक्सपेक्टेशंस के टूटने का दर्द और उसका बोझ जो कैरी अकेले किया. आई एम नॉट ब्लेमिंग पेरेंट्स हियर, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू मम्मा, आई लव यू, बट दैट वाज समथिंग डिफरेंट. तुम्हारे बड़े तुमसे बोल रहे हैं कि हमें तुमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है और हमें पता है तुम कर लोगी, पर बॉटम इन योर हार्ट यू नो कि इवन दो यू टेक अ ड्रॉप इट माइट बी कि तुम जहाँ हो तुम वहीं रहोगी. It's hard. And I love recording. I love recording, I love vlogging, I love talking to myself. And I stopped that because I thought might be this is the reason. Isliye I am recording today, and it's very hard because this is the 5th time I'm trying to voice over this video because I don't know. First I tried to write something, script something to make it very aesthetic and very perfect. But then I realized कि मैं इसको perfect बना ही नहीं सकती. So I'm giving it a voiceover like this. I just want to tell myself that I'm proud of you because I don't think so I have told myself that I'm proud of you lately. So this is the recent my first tech fest, which was IMC, which was happening in NCR. It was really fun, and this is where I realized that I really have a passion for technology and I really want to do something when everyone around me are doing such a crazy things. मैं इधर अपने पेरेंट्स के साथ गई थी and they were also amazed by the technology happening around us, and it was the best time with friends, with family, and it just made me realize कि कुछ खो के बहुत कुछ शायद मैं पा रही हूँ in this journey, because now since I'm taking decision for myself, I know what I'm doing for myself. Dear Soumya and everyone who is listening to me, I hope you pause this video here and tell yourself that I'm really proud of you. अच्छा जा रहा है दिन, गंदा जा रहा है दिन, but you should be proud of yourself at the end of the day because you survived the day. And please don't be like me. Don't be so mean to yourself when you should be the nicest to yourself. And dear Soumya, I want to tell you that all those bad months, all the months you doubted yourself, all the months you were in the bed, all the months you just binged movies because you didn't want to face the reality, it's fine. It was absolutely okay, and you don't have to kill yourself when killed. It's absolutely fine. And you deserve everything. Don't tell yourself you don't deserve everything. I swear to God, you're right now feeling कि everything is falling apart, which is actually falling apart, क्योंकि भगवान तुम्हारा भला चाहता है. जैसे सनम तेरी कसम की लाइन है, दिल का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो सब ऊपर वाली की मर्जी है. And I swear to God, I'm not making it romantic or something, but भगवान चाहता था you start from zero, and so you can start with that and you can, walk together, you and your mom. I really love you, Mama. I have best relationship with Mama ever in my entire life. Now she accepts me for who I am. And she even taunts me, but अब मुझे उसका बुरा नहीं लगता because I have learned to let some things go. And सारी चीज़ों को personally नहीं लेते. Because now I am no more in my puberty, I guess. But I'm also learned how to take stand for myself, because taking stand for myself taught me many things. And it taught me कि life में मेरे लिए कोई stand नहीं लेगा except for myself. And even my parents cannot take stand for myself because they don't know what's right and wrong for me. I had to be this much confident to make them believe in me. Hi dear Soumya, I want to tell you that please do not guilt trip yourself that, oh, you had fun in Shadi. Shadi was so much needed. It was so much needed for me to understand that you are the most prettiest woman to ever exist. It gives me Tanvi vibes for some reason, and now I feel like I have Tanvi. Look like Tanvi. I actually had a wolf cut, but it doesn't feel like a wolf cut. And earlier when I actually started vlogging and recording, Mama Papa बोलते थे पढ़ाई लिखाई करो, इसमें क्या है,
But right now, my mama just closed the door, said कि अच्छे से करो, अच्छे से recording करो, because now she knows my hobby. This is my love. This is my passion. And parents को time लगता है तुम्हें समझने में. You just have to be the one who, make that bridge in the two people's gap. You have to be the bridge. And everything will be okay. You just have to go slow. भगवान करे इसको नज़र ना लगे तू because I trust in नज़र. But swear to God, you're learning, you're becoming a better version of yourself. And I didn't really visualize you the way you are. You're actually healing. And we think healing किसको ज़रूरत है, but everyone needs it.